Good evening, everybody. This is Ishita Mukherjee. Am I audible? Okay, I can see thumbs up signs. Are we ready to start? Okay, I can see all sorts of answers coming. That's wonderful. Let me just quickly open my um, all right, my chat box is also open. And let's start off. So I'm going to share my presentation, and also I would, sorry, like you to tell me if that is, I'll switch my video, and I would like you to tell me whether my screen is visible to you all. So I'm just switching off my video. Is my screen visible to everybody? Okay, I guess I can see thumbs up signs. I just need to get my chat box down here. Give me a second. Right. Okay, I'll try. My chat box has suddenly disappeared, so I'm having a bit of a trouble with it. So I will ask you to bear with me because it has suddenly gone upper and not. Okay, so let's start for the day. Again, I need an answer. Am I audible and visible? Okay, I can see thumbs up. I'm right. So, since we are today all mathematics teachers out here, I welcome you all to today's session. And we are going to talk about teaching mathematics. It's basically, as mathematics teachers, what is expected of us from the subject, from people, from students, what is expected of the students, and how can we prepare them for the future? Because
After all, we may or may not be a part of their future, and they would have to face their future alone. So we may not be able to even get to see that future, that what kind of challenges they'll be facing. So we have to prepare them for the unknown, and the unknown not for just them, something which is unknown for us. Would you agree with that? That we have to prepare them for a future which is also unknown to us. Okay, I can see some people agreeing. Okay, so let's move on to our next thing. So, what exactly is mathematics? In fact, I'd like to go back and ask you that. Can you write down in the chat box what is the first thing which comes to your mind when you come across the word mathematics? Like you can see on the cover, there are so many things which are related to mathematics. Okay, so therefore, can you just write down what mathematics means? I can see numbers, all right, numbers. Okay, playing shapes, great. Numbers, I see a lot of numbers. Calculation, okay, logical thinking, fine, wonderful. Lot of things, and you can also see how differently we perceive. Somebody talks about shapes and figures, somebody talks about numbers, education, logical thinking, all sorts of ideas. So let's go to the actual definition of the subject. Mathematics is the science that deals with the logic of shape, now comes, look at the next line, which is what is very important and very interesting. There is a debate over whether mathematical objects such as numbers and points exist naturally or are human creations. Would anybody like to, I mean, can you put it, what do you think? Is mathematics a human creation, or is it something which was there and we are discovering it? Some people are saying I'm not audible, but I think since people are answering, so I guess whoever cannot hear me, probably the problem is at your end. Kindly do check up hearing. Others, can you put a thumbs up sign so that I can see if you can hear me? All right, I can see thumbs ups there. Okay, great. So people who are having any problem with the voice, please look at your end, what can be done. Coming back to the question that I was asking, that what is it? The other day I was another presentation which was an English lecture which was going on. Now, if I tell you that the number, the term natural numbers come from the nature, the environment around us. Whereas when we talk about half or quarter or all these kind of things, these are abstract ideas. Do you agree with that? Okay, let me take it further. What it means is that if I have, like, to a person who does not know maths, when I suppose I find a twig, a branch, how many branches do I have? I have one branch. All right. If I break it into two, what would I have?
If I look at the natural environment, I will say that I have two branches. Okay. Half is an abstract concept, that is ye uska half tha. Now, what is half? You can't, if a half has to be of a particular object. You can't have half just floating around कि ये half है. Half है तो किस चीज का half है? Okay, so certain ideas, numbers, they are actually human abstractions. And so, through abstraction and logical reasoning, mathematics evolved from counting. Counting is the very first thing. So, please understand the numbers were given by humans. Okay, the idea of one and two is more than one, and we'll call it two. Week in English it is two, in Hindi it is do, in Bengali it is do, in Urdu it is do. So these things. But to understand the naturalness of it, that one, to that, if I take another more, it becomes more. How much more? One more, two, and then three, and so on, so forth. So, through abstraction and logical reasoning, mathematics evolved from very simple things like counting, calculation, measurement, and the systematic study of shapes and motions of physical object. Okay, it went from here to here. Practical mathematics has been a human activity for as far as written records exist. You know, it was used for taxation. आप जैसे you are kind of growing फसल खेत में, अगर खेत में फसल ये कर रहा है, उसका एक चौथाई आपको जो तब रूलर था, राजा था, उसको देना है. So you have to firstly you have to have mensuration. एरिया कितना है आपका, एरिया निकाल लिया तो उसका आधा, उसमें जितना गेहूं या चावल या दाल जो भी फला है उसका आधा आपको देना है. Percentages, tax, all these things which are basically based on arithmetic, were the first things which came up in mathematics. So when we teach, as you see, we can traverse so much. कहाँ सिंपल काउंटिंग बाय स्टिक्स, या आपने देखा होगा गुफाओं में दाग काट काट के ये लिखना, उससे नाउ वी आर यूजिंग मैथमेटिक्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन न्यूक्लियर मैथमेटिक्स, न्यूक्लियर साइंस, all kind of things. Okay, so teaching mathematics has to be very effective. What does that mean? Teaching mathematics can be described as truly effective when it positively impacts student learning. We know that teaching practices can make a major difference to student. हम कैसे पढ़ाते हैं, किस तरीके से पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं. Okay, it makes a difference in the classroom. You will find so many students will, आपके उधर भी, where you are, that students go to class, this particular ma'am or this particular sir इतना बढ़िया तरीके से ये वाला सब्जेक्ट पढ़ाती. अरे पढ़ा तो और भी टीचर रहे, but वही same book, same course, same thing, but there are effective teachers who bring in that extra to the class. तो हमें ये क्या करना है? The goal is for students to be literate in mathematics. In which world? Remember, I told you the world which we probably will not see. They have to be literate in mathematics so that we can prepare them for a world where the subject is rapidly growing and is extensively applied to a diverse number of fields. आज के समय, पहले आप, आई थिंक हमारे जमाने में भी था कि ओ ऑल राइट, मैथ्स कर रहे हैं, बायो कर रहे हैं तो मैथ्स ऑप्शन है. You could do physics, chemistry, biology and not have mathematics. But without the knowledge of mathematics, because there are so many fields, all these scanning and thing, reading data and all these kind of things you are expected to know.
All right. So this new world, this new paradigm expects what from our students? It expects they construct their own understanding. They have to know how to learn to learn. Remember 2 years of the pandemic. As teachers, we could not do hand holding for them. We could only, जैसे हम इधर कर रहे हैं कि over the screen tell them ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है. But ultimately, it was on the student कि पढ़ना है, सीखना है या नहीं है. All right. So this willingness to learn, to be able to learn all through their life, construct their own understanding, that is something which needs to be done by the student. Apply prior knowledge and skills. Everything, and especially in mathematics, it is cumulative. Without arithmetic, you cannot have the other. एक बात सोचिए, as I said, counting and adding, subtracting, all these four operations, they were the very, very simpler part of mathematics. And as you are well aware, कि प्राइमरी तक हमारे सारे ऑपरेशंस खत्म हो जाते हैं. By class 5, a child knows how to add, subtract, multiply, divide, long division, short division. The child knows about fraction, the child knows about decimal. ये सारे जो arithmetical things है, बच्चे को आ जाता है. But इसका मतलब क्या ये इधर खत्म हो गया? Can we just forget all the rules about all this and go ahead? No. बिकॉज इन पे इनको नींव बना के हम आगे बढ़ते हैं एंड वी यूज दीज नॉलेज एंड स्किल्स to do what? Now we go into abstraction. We are going to, in middle school, we come to things like integers, completely abstract, algebra, generalized arithmetic. Then other things like, as, it goes by, we go into things like more complex algebra, we go into trigonometry, we go into calculus, more and more abstraction than concrete materials that we can work it. But unless we do not have the foundational strength of the arithmetic of till class 5, we cannot go ahead. And same, unless you know your integers properly, आप आगे जाके नहीं कर पाओगे आपके calculations. If you don't understand algebra, if you don't understand various kind of triangles, circles, again, like trigonometry में जाके, we start off, though it is a circular function, we start off with the right triangle. There are children in class 10th. If I say, would you agree that there are children in class 10th who do not know what is a hypotenuse? That is, वो सोचते हैं कि कोई भी triangle में the longest side is a hypotenuse. Would you agree with me? Yeah, I can see thumbs up coming. Yeah, that हाँ ऐसे स्टूडेंट्स मिलते हैं कि जो हाइपोटेन्यूज वो पढ़ने चले हैं ट्रिग्नोमेट्री, पर उनको या सोचिए पाइथागोरस थ्योरम जो ऑफ कोर्स अभी प्रूफ और नहीं रहा, तो खैर जो भी हो, बट उनको ये नहीं मालूम कि हाइपोटेन्यूज है क्या. ऑलराइट, ओके. आर कंसिस्टेंटली चैलेंज्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग. All right, they are challenged कि ये कैसे करे, because everything like our brain also needs exercise. हम अगर उसकी exercise ना करें और बच्चों से ना करवाए, mind you, that doesn't mean that we give them very difficult stuff which is not according to their age level or knowledge level. No, but also do not spoon feed them. They have to be challenged to learn. All right, आप उनको, do not ever as a teacher, please bear, this is something I firmly believe in, do not become the answer key. आप उनके आंसर की नहीं है. यू आर द क्वेश्चनर. आप ऐसे क्वेश्चन पूछे कि बच्चों को जो सोचने पे मजबूर करे और उस तरफ देखे
जिस तरफ आप उनको ले जाना चाहते हैं। Your questions should be very wonderful, very focused questions. Never give the answer, but give questions so your student is forced to look at that direction कि ये आंसर देने के लिए मुझे इस बारे में सोचना पड़ेगा. Next is take risk. Take risk means don't be scared to experiment, make mistakes. I know it sounds very easy क्योंकि our education system in India is so based on marks, full marks. एक मार्क छूट गया तो परसेंटेज की ये कमी आ जाएगी एंड कोई अच्छे कॉलेज में यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा. ओके, सो यस, आई नो इधर बैठ के बोलना ये है, बट अल्टीमेटली इफ एनीबडी हैज टू लर्न then we need to take risks. गलती होगी, उस गलती से सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे. So obviously, because we need to think of our children's future, we will not make them take risk for their summative exam. But class may make them so confident, so having faith in you कि उनको लगे कि गलती करे भी तो हमारे टीचर, मैम या सर, ओके, वो बुरा नहीं मानेंगे या डांट नहीं पड़ेगी, ये गलती हो सकती है. आई कैन कॉन्फिडेंटली ट्राई आउट एंड आई विल नॉट बी ह्यूमिलिएटेड फॉर दैट. And lastly, which is very important, okay, for this question, I want you people to answer with a thumbs up अगर आपको ये question आया हो कभी भी आपके टीचिंग जमाने में. Why are we learning this? मान लीजिए आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ा रहे हैं, आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं, आप पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा रहे थे, या कुछ भी आपको कभी सुनने को मिला है कि why are we studying this? How many of you have heard this question from your students? Okay, I can see yes, I can see thumbs up, right? अब आप ही बताइए, there is a question. Let me tell you, I gave up regular teaching, that is school teaching, in 2014. 2015 onwards, I've been, doing programs for doing consultation for CBSE. So 2014 तक तो मैं पूरे दम से बता सकती हूँ. क्लास 8 में आई थिंक वो अभी भी है, पिछले साल तक तो था, अभी नया एनसीईआरटी बुक आने वाला है. जो कमर्शियल मैथ्स का चैप्टर है उसमें एक क्वेश्चन है कि एक बच्चा जाके या एक आदमी जाके 2 बफलोज खरीदता है and at the same price, and the person and the whoever the child or the person sells one at a profit of 20%, ऐसा कुछ था, and the other one at a loss of 15%. What is the profit or loss percentage in the for the whole transaction? Am I right? ये है question class 8 के book में. I can see smileys. Ah, okay, I can see all the yes also. अब आप बोलिए, अब मैं दिल्ली में बैठी हुई हूँ. I am not sure you are from all over, the place. So if I take, say, cities and just imagine, पहली बात तो ये है कि as far as I know, cattle, buffalo या cow, all these things, 15-20 हजार में नहीं बिकते, लाखों में बिकते हैं. Am I correct? Yeah. Okay. So firstly, हमारा जो real life experience है, I mean, it does not match. Okay. It is like saying that you get a smartphone for 100 रुपए. All right. Or you can buy a laptop for 250 रुपए. No. बच्चे जानते हैं, आई मीन स्मार्टफोन, लैपटॉप, ये सब इनके बारे में. ओके. सेकेंडली, क्लास 8 का मतलब मान लीजिए 12-13 साल का बच्चा. 12-13 साल का बच्चा जा कभी भैंस खरीदने जाता है क्या? आपको लगता है? आप जानते हैं?
मैं मानती हूँ अगर रूरल एरिया है, हो सकता है उनके पेरेंट्स जा रहे हैं, फादर, अंकल, चाचा जी, ताऊ जी, जो भी, वो जा सकते हैं। वो बच्चा कभी खरीदता है क्या? So the point is how stupid, I'm sorry, but it is really a silly question जो पता नहीं किस जमाने से आ रहा है। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं एज अ टीचर बोल देती हूँ, आप देखिए ये 15-20 हजार की बात कर रहे हैं, मतलब 5 डिजिट्स, ऑल राइट, 5 डिजिट्स, कैन आई से कि एंड अभी पैंडेमिक किया है, सो ऑलमोस्ट एवरी चाइल्ड इज अवेयर ऑफ स्मार्टफोन्स, कि ऐसा अब ये एक कारण था, कुछ ऑनलाइन क्लासेस थे। सो दिस वंस फादर बॉट 2 स्मार्टफोन्स फॉर से राजा एंड रानी। अब स्मार्टफोन आपका 5, अगर आप बोले एक स्मार्टफोन का प्राइस 15 हजार है या 20 हजार है, अगर आप चाहे तो लग, चिल्ड्रन कैन रिलेट, यस और नो। अगर मैं भैंसों की बात ना करके अगर मैं इधर मोबाइल फोन की बात करूं, डू यू थिंक चिल्ड्रन विल बी एबल टू रिलेट मोर टू द क्वेश्चन? सो देयरफॉर मैं कहती हूँ कि इन दोनों ने फोन लिया, पर किसी कारण उसके बाद स्कूल खुल गए या ये हो गया, तो दो इनको जरूरत नहीं थी, फॉर वॉट एवर, सी वी कैन ऑलवेज मेक अप स्टोरीज, तो उनके फादर ने बेच दिया, एक को इतने में, एक को इतने पे, सो दे आर used to these kind of things. हमारे times, so many times we buy a new fridge or a TV जहां हम exchange पे खरीदते हैं, तो उसके कम दाम मिलते हैं या उसको बेच देते हैं कोई आके सेकंड हैंड। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स दीज चिल्ड्रन सी अराउंड देम एंड दे सी पर्पस इन लर्निंग देम। सो देयरफॉर व्हेन वी आर टीचिंग वी शुड नो कि हम किस पर्पस से एंड वैसे वाले क्वेश्चंस चूज करें। और चूज करें मतलब क्या, आप लोग तो इतने सालों से वो पढ़ा रहे हो ना, अरे भैंस को हटाओ, लेट द नंबर्स की, भैंस को आप बना दो सैमसंग फोन, और भी पता नहीं जो जो भी आते हैं, वीवो फोन, जो भी कुछ बना दो। उससे आपको 6 डिजिट में जाना है, लैपटॉप बना दो। These are the things children see around them. टेलीविजन बना दो, फ्रिज बना दो, ये सब घर में होते हैं, बच्चे देखते हैं, इनका प्राइस मालूम होने का भी इनका ये है, ज्यादा चांसेस है। So what happens? So these are what we are expecting from our students. तो हमारे स्टूडेंट्स को अगर ऐसे तरीके से सीखना है, तो हमारे टीचर्स से क्या एक्सपेक्टेशंस है? वी want effective teaching from our teachers. So what is effective teaching? What do effective teachers do? So effective teachers, again, know how students learn. अभी देखिए हमने बात की ना कि भैंस वैस का दिन चला गया, ऑल राइट, हमें we have to bring it, how do students learn? Students learn best when it is relatable to their experiences, to their life around them, to their environment. And which also, if you think about it, in a country like India, actually it is very difficult. We are such a diverse country. Now the life experiences of, say, a child in staying in Goa may be very different from a life experience of a child in Srinagar, which may be very different from from the life experience of a child staying in Ranchi, and so on and so forth. So therefore, the textbook is just a guideline, but we need to build our teaching around हमारे आसपास जो है. We can bring that in. एक बार बच्चा उससे सीख जाए, then the textbook questions can be done as practice material. Know what students need to learn. आगे जाके उनको क्या सीखना है. Again, I would like to give an example out here. Thankfully, now they've made it very clear. How many of you are aware, या आपने खुद पढ़ा है या पढ़ाया है या बच्चों को पढ़ते देखा है,
प्राइमरी क्लासेस में रोमन न्यूमरल्स? Please put a thumbs up sign or something if it is yes, because then it is easier for me to see. All right, that if you have seen children studying Roman numerals, they are studying till, 1 2 3 4 एकदम 100 तक, then L C M D, frankly मुझे भी ये याद नहीं है क्या है. अब मैं आपसे ही पूछती हूँ, आपने लास्ट रोमन न्यूमरल में 13 कब लिखा या 20 कब लिखा? अगर नहीं लिखा तो थम्स डाउन कर दीजिए. आई कैन सी वन थम्स डाउन. अभी आ रहे हैं और देखा, हमने कभी वो भी 12 तक हम कहाँ देखते हैं? ज्यादातर घड़ी में देखते हैं रोमन न्यूमरल 1 to 12, या हम क्लासेस स्कूल्स में होता है ना, क्लास 1 क्लास 2 वैसे लिखा देखते हैं. तो ठीक है, आप बच्चे को 12 तक सिखा दो, 50 सिखा दो, 100 सिखा दो, खत्म कर दो, इवन एज एक्टिविटी. पर नहीं, हम बच्चों को हाउ टू ऐड 20 + 14 तो 34 आएगा, 34 को हम रोमन न्यूमरल में कैसे लिखेंगे? इसका आगे जाके क्या फायदा है? डज अ स्टूडेंट नीड टू लर्न दिस? प्लीज राइट yes or no on your chat box. Do they need to learn 200 500 50? ये सब क्या बच्चों को सीख के और इसका टेस्ट होना क्या जरूरी है? आपको क्या लगता है? आई कैन सी नो. एग्जैक्टली. नो व्हाट द स्टूडेंट्स नीड टू लर्न. आपको बहुत ऐसे, यू ऑल आर वेरी एक्सपीरियंस टीचर्स, यू ऑल नो दैट आगे जाके ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बच्चों को बहुत काम आएगा, इसमें मुझे ज्यादा ध्यान देना है. वेर इज ये उतना ये नहीं हो, सो आई एम गोइंग टू स्पेंड लेस. ये नहीं कि आप ना करवाइए, क्योंकि आपके एग्जाम में तो आना ही है, आप उसको छोड़ नहीं सकते. बट इंटरनली यू कैन डेफिनेटली गिव इट लेस वेटेज. know what your students already know. ओके, आपको मालूम होना चाहिए कि मेरे बच्चे का, दैट मीन्स यू शुड हैव आइडिया अबाउट योर स्टूडेंट्स प्रायर नॉलेज. ओके, बच्चे कितने तक जानते हैं, या चांसेस है कि मेरे क्लास में बच्चा बैठा तो हुआ है 7th 8th या 9th में, पर इसको 5th का मैथ्स भी हो सकता है, फ्रैक्शंस नहीं आता है. आप 7th में रैशनल नंबर्स पढ़ाएंगे, पढ़ाने से पहले यू शुड हैव एन आइडिया दैट रैशनल नंबर्स पहुंचेंगे क्या, इनको फ्रैक्शंस आता है? बिकॉज अगर आप बिना ये चेक किए, बिना जाने आप पढ़ाना शुरू कर देते हैं एंड यू रियलाइज अरे इनको तो फ्रैक्शन ऐड करना नहीं आता, तो ये रैशनल नंबर्स जब हम वी आर डूइंग P/Q एंड यू नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे, ये हाउ कैन दैट बी पॉसिबल? इट वुड बी अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम, एंड टाइम इज सो प्रेशियस. Encourage risk taking. What do we want the children to do? To take risk. What do we want the teacher to do? The teacher should encourage children to take. हाँ, इस मेथड से करके देखो तो आप देखो, हो सकता है आपको मालूम है कि ये जो आए करेगा बच्चा गलत करेगा, पर तब आप उसको समझा सकते हो कि आपको मालूम है ये कहाँ गलती की है आपने, किस स्टेप में. डोंट से कि नहीं ये गलत है एंड यू स्टॉप इट. as children are doing their work and you are going around, आप झांक रहे हो कौन क्या कर रहा है, आप देख रहे, unless somebody says sir is this right या ma'am is this right, then you can ask do you think ये आ सकता है, let the child think, yes no मत बताइए. बट अगर आप देख रहे हो एक बच्चा गलती कर रहा है, डोंट इमीडिएटली से ये गलत है, लेट द चाइल्ड टेक द रिस्क. यू मे स्टैंड एंड क्वेश्चन, अच्छा ये वाला स्टेप आपको कहाँ से मिला, कैन यू एक्सप्लेन मी? एंड हो सकता है द चाइल्ड विल रियलाइज फ्रॉम देयर.
क्रिएट पर्पसफुल लर्निंग एक्सपीरियंस, वही प्लीज भैंस को बदल दीजिए, भैंस को बदल के ब्रिंग इन एनीथिंग जो आपके उधर more children can relate to, and which I will sitting in Delhi will not prescribe for you. मैंने जैसे एग्जाम्पल दिया फोन्स का, डिफरेंट काइंड ऑफ स्मार्टफोन्स का, आप टेलीविजन्स ले सकते हो, फ्रिज ले सकते हो, यू नो एज अ टीचर आपके बच्चे के एनवायरमेंट में क्या क्या चीजें होती हैं, you can always change it to that and create challenge. All right. So, effective teachers recognize the importance of using concrete materials and visual representation to develop a deep understanding of the subject. Whenever you make a thing visual, whether best is of course concrete, and after that अगर concrete नहीं हो सकता है तो definitely pictorial. Like अभी जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, it is impossible for me to do concrete. आप जो देखोगे आप अपने फोन पे देखोगे या लैपटॉप पे देखोगे, so it will be pictorial for you. But what I'm saying, even pictorial, rather than me talking away like this or showing you just written slides, it is so much more effective when we can, show that what is the pictorial or the visual representation of it. Let's try out this next thing. आपको देखने में ये बहुत simple लगेगा. I've started with a very simple thing. Let us look at the following picture. So what do we see here? We see a pattern. All right. Do you remember when the first definition of mathematics? It is the study of patterns. What are patterns? Patterns हमारा नंबर सिस्टम ही तो एक, जो हम काउंटिंग शुरू करते हैं वो खुद ही तो एक पैटर्न है. एक बढ़ता चला जा रहा है या एक घटता चला जा रहा है. आप देखो, व्हेन वी टॉक अबाउट म्यूजिक, व्हाट इज म्यूजिक? पैटर्न. जैसे ही पैटर्न हट जाता है वो बेसुरा हो जाता है. So therefore this is also a pattern for me. Now I have some questions which you can answer in the chat box. All right. So the first figure you can see is made of 3 matchsticks. The second figure is of 2 triangles, but कितने matchsticks है? 5. आप गिन के देखो तो आपको 5 दिखेंगे. दो ट्रायंगल, 1 triangle, 3 matchstick, 2 triangles, 5 matchstick, and third one is 3 triangles made of 7 matchsticks. Okay. Do you see a pattern emerging? क्या आपको एक पैटर्न दिखने लगा है इसमें? क्या होता जा रहा है? जैसे ही हमारे ट्रायंगल्स बढ़ रहे हैं, उसमें क्या बन रहा है? क्या पैटर्न बनता जा रहा है? ये ट्रायंगल बन कैसे रहे हैं? Yes, by adding 2 sticks at each time. So in that case, अगर हम, ये हमारे पास बने हुए हैं 4 ट्रायंगल, अगर हमारे 10 ट्रायंगल हो तो 10 ट्रायंगल के लिए हमें कितने स्टिक्स जरूरत होगी? कितने मैच स्टिक्स? द फर्स्ट वन विल बी 3 और बाकी जो 9 है उसके लिए 2. So 9 into 2 is 18, and 18 plus 3 is 21. What have I done? I have done arithmetic. I have studied this and made a arithmetical calculation. Now, can I shift this to algebra? Can I make it into generalized arithmetic? आप देखिए, how did we reach here? अगर हम
just ऐसे लिख देते. Do you think, how many of you think giving this visual, or if we ask even our children to use, toothpicks or ice cream sticks, and they develop it, do you think that is more helpful rather than just giving this language? What do you feel? Yes or no? Did it help you? Did it make it easier for you to understand the question because of the visual representation? Okay, I can see a lot of people say yes. Okay, thank you. So I'll just quickly show you, some of these which you can use. Okay, just a second. So similarly, we can have, like, here it is a pentagon. It's a very similar question कि फर्स्ट वाले में 5 स्टिक्स है और उसके बाद ये तो पहले से है, हम चार जोड़ते चले गए. सो दिस वाज 1, this is 1 plus this is 4, this is 2 plus 2 into 2, 1 plus 2 into 4. And so what will be the many line, what how many lines will be needed for the nth figure? Out here, similar kind of things. So these are things, you can do in junior classes, maybe even in 6th, 7th, when we are starting off with algebra. Because what are we talking about? We are talking about the unknown. All right, a variable, the nth figure, the nth number can be anything. So we are talking about algebra. And if you look at it, actually, this is class 10th May. We are going to call it the arithmetic progression. All right. So therefore, okay. So what is the perimeter of each shape out here? So this is 4. And इधर क्या हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 4 plus 4. And then when I count this will become 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So 8 plus 4, that's 12, and so on, so forth. Okay. So how is it happening? Again, we have an arithmetic progression. Now let's talk about something. First, I want you to look at the question. Please read the question. That half of the spirit in a bottle evaporates in 12 minutes. If there is 480 ml of spirit in a bottle, 1 घंटे के बाद कितना बचेगा? All right. So when we say this, then a lot of people, it 12 minute, 1 घंटे में 12 minutes. So therefore we divide it. I'm talking about children, not teachers. I'm talking about what a lot of average children would do कि हर 12 मिनट में ये खत्म होगा. therefore मतलब इसका 480 ml, इसका 1 घंटे में, इसको 12 से ये डिवाइड कर देंगे. Now suppose, firstly can somebody tell me ये जो क्वेश्चन है ये एक्चुअली किस टॉपिक पे है? I want to know the topic. Wouldn't you say that this topic is actually based on geometric progression, a decreasing geometric progression, जो हम 11th में पढ़ाते हैं जाके? अब देखिए, अगर मैं ये वाला हिंट दे देती हूँ बच्चों को कि आधे घंटे के बाद ये बचा 240 ml. ओके, सॉरी, 12 मिनट के बाद. फिर और 12 मिनट मतलब 24 मिनट के बाद जाके वो 240 ml और आधा हो गया 120. डू यू थिंक नाउ
even the average child will be able to figure out कि ये क्या हो रहा है. Instead of dividing directly by 5, okay, कि 60 में 12 5 बार है, so therefore 480 divided by 5 कर दिया. Now are they going to understand कि कैसे करके करना है? Every 12 minutes वो आधा होता जा रहा है. So therefore if you look at it, हम लोग इधर थे 12 मिनट के बाद, सो आपके 36 मिनट हो गए 60 ml. उसके बाद और 12 मिनट विच इज 48 30 ml, और एंड में जाके आपका आंसर क्या आएगा? द आंसर विल बी 15 ml. Can you see it is a geometric progression? What a simple way of giving demonstration of geometric progression, right? Now let us see what are the other effective ways that we can teach our children. It can be they are able to look at students' misconception and reteach the material using their understanding of the developmental nature. मैंने आपको बताया था कि मैथमेटिक्स क्यूमुलेटिव है. You have to climb up the steps. हम हेलीकॉप्टर जाके ऊपर नहीं लैंड कर सकते. ऑल राइट, सो सीढ़ी चढ़ के ही तो, और बीच में से अगर एक दो सीढ़ी वो गायब रहे उसके स्टेप्स, so the child will fall down through it. Okay, so therefore we have to, when we find out कि गलती कहाँ पे है, we need to find that misconception and go back. It doesn't, we cannot give the excuse कि ये वाला टॉपिक तो आना चाहिए था, ये क्लास 6 में करवाया जाता है, ये क्लास 4 में करवाया जाता है. डजंट मैटर, आप 10th पढ़ा रहे हो, आप 12th पढ़ा रहे हो, आप देख रहे हो इस बच्चे को ये वाला नहीं आता है जो क्लास 8 में सिखाया जाता है. Well, you have to go back there with the child and teach that concept. Otherwise, the child can't go ahead. Let me give you an example. Look at this. I'm sure आप लोगों ने ये जरूर देखा होगा. गलती कहाँ पे है और प्रॉब्लम क्या है? I think all of you have realized where is the thing. गलती है इस स्टेप पे. इधर से इधर पहुंचना, इधर से इधर पहुंचना, इधर गलती है. ऑल राइट, स्टेप का पता चल गया. ये गलती क्यों है? Why is this a mistake? What has the child done? The child, we know that A and B are equal, and therefore A minus B is equal to 0. The child has divided both sides by 0. Division by 0 is not defined, is something we learn in class 4 or 5, usually around class 4 when we teach them division. We give various kind of examples that why dividing by 0 is not defined. And there is a big confusion. One is dividing 0. 0 को कैसे 0 को divide करें तो 0 ही मिलेगा. 0 divided by 1 is 0, 0 divided by 10 is 0, 0 divided by n will be 0, anything. आपके पास कुछ नहीं होगा तो क्या बांटेंगे? कुछ नहीं. But if you have 0, if you have something and you want to divide by 0, you cannot do it. It is not possible to do it. We cannot define it anyway. So this is undefined.
and hence the misconception lies that the child does not understand the concept that division by zero is not possible. So, as an effective teacher, looking at the mistake, you have to diagnose problem kahan pe hai and you have to address that issue. इधर से ये गलती से पता चला कि बच्चे का स्टूडेंट का प्रॉब्लम है डिविजन बाय जीरो नहीं आता, ये कॉन्सेप्ट नहीं है बच्चे में या क्लियर नहीं है. ऑलराइट, ओके. एक ये वाला देखते हैं. ये आपने बहुत देखे हैं, सोशल मीडिया में आते रहते हैं. आपको क्या लगता है ज्यादातर बच्चे फटाफट जब ये कर रहे हैं इसका आंसर क्या देंगे? मुझे लगता है वो आंसर देंगे 9. वुड यू अग्री विथ मी? वो क्या करेंगे, ये 3 एंड 1/3 को कैंसिल करेंगे तो आ गया 1, -1 + 1 कैंसिल हो गया, द आंसर इज 9. पर क्या ये बात सही है? विल इट बी करेक्ट? I can see the correct answers coming up as 1. Yes, और ये 1 क्यों होगा? Because they forget that this is a division sign. The moment it is 3 divided by 1/3, it means that you multiply by the reciprocal. So it actually is 9 minus 3 into 3 plus 1. So 3 into 3 is 9. So 9 minus 9, that cancels out. So your answer is 1. So this means what? The child does not understand division by fraction. All right. A division by a fraction means taking the multiplication of reciprocal. That child is not clear about that. As I said, give examples from things which they are aware of. Let's take a question. I took it. So what do we have out here? The content and the practices utilize multiple ways to represent. Now, जब हम आप देखेंगे इंटीजर्स पढ़ाना शुरू करते हैं, आप टेक्स्ट बुक में ही देखिए हमें क्या क्या एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं. We give examples like say temperature. अब इंडिया में 2-1 जगह छोड़ के 0 डिग्री ही नहीं पहुंचता तो नेगेटिव क्या है? आप लोग जहाँ पे है, आप लोगों ने कभी आप जिस जगह रहते हैं वहां कभी आपने नेगेटिव टेम्परेचर देखा है? I can see no. Somebody who's been lucky enough. ऐसा नहीं कि आप घूमने गए थे आपने स्नो देखा, नहीं. आप जहाँ रहते हैं, नहीं. तो देखिए जब बच्चा वो टेम्परेचर एक क्लास 6 का बच्चा वो -7 डिग्री -5 डिग्री ये समझेगा कैसे? इट इज नॉट रिलेटेबल टू द रियल लाइफ. अगर आप टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर के बारे में बात करें, थर्मोमीटर की बात करें, अरे भाई थर्मोमीटर में तो 0 होता ही नहीं है क्योंकि तब तक तो आदमी मर जाएगा. So therefore, now here look at this फ्लैट. आजकल ऑलमोस्ट हर जगह आप देखिए मॉल्स में होते हैं, टाउनशिप में फ्लैट्स होते हैं और जिनके यू कैन हैव बहुत कुछ होते हैं बेसमेंट में, पार्किंग बेसमेंट में होता है, जैसे इधर जिम है. तो आप जब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अब जॉन का फ्लैट है 4th फ्लोर पे, ठीक है, इधर है, उसको जाना है -1 पे. सो 4 से माइनस नीचे आ रहा है, माइनस कहाँ पे? -1. कितना आया? 1 2 3 4 5. ऑल राइट. नाउ डू यू थिंक दिस इज अ मोर रिलेटेबल एग्जाम्पल फॉर अ चाइल्ड देन यू टॉक अबाउट कि ये टेम्परेचर था? अगर हमें टेम्परेचर की बात ही करनी है
अब जैसे हम वी कैन टॉक अबाउट आजकल चिल्ड्रन आर अवेयर ऑफ अभी आपने देखा होगा दैट हॉरिफाइंग थिंग, जो ये जो टाइटैनिक का ये देखने गए, वो डेप्थ में जाके वो प्रेशर में वो टाइटैन जो टूट गया एंड दोज पीपल डाइड. सो अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन वर वेरी वेरी इंटरेस्टेड कि क्या डेप्थ है कहाँ पे जाके. सो अभी देखिए, दे नो दीज नेम्स, स्टारफिश. स्टारफिश कितने लेवल तक जा सकता है? 7 मीटर्स. 7 मीटर्स कहाँ? पानी के नीचे. शार्क, दैट इज ग्राउंड, इसके शार्क 9 मीटर्स. डॉल्फिन 8.3 मीटर्स. ऑल राइट. तो -7, -9, -8.3. अरेंज द डेप्थ. डीपेस्ट, तो डीपेस्ट कौन है? शार्क. इनमें वैसे यू कैन हैव अ क्वेश्चन कि आप आजकल तो गूगल बाबा के दौलत से यू कैन से ओके इधर 3 दिए हुए हैं, कैन यू फाइंड 3 वाटर बॉडीज जो इतने डेप्थ में जाते हैं, एंड मे बी 3 बर्ड्स जो इतने हाइट में, बिकॉज आई एम नॉट वेरी श्योर, आई थिंक ईगल्स probably fly the highest. You can check up, and then they can see what is the difference between the two. Say a blue shark or something, वो कितना नीचे है, और ईगल उस ऊपर, तो कितना डिस्टेंस एक्चुअली वो होगा दोनों के बीच में. So therefore positive and negative. ये वाला देखिए, I found this very interesting, so I thought I should share it with you. All right. अब ये वाला चीज आप देखो, हम एब्सोल्यूट वैल्यू बच्चों को अभी नहीं सिखाते हैं. पहले, बहुत पहले सिखाया करते थे. आई थिंक हम लोग जब स्कूल में थे हमने सीखा था, पर अभी नहीं सिखाया जाता है. सो व्हेन वी टेल देम that especially when we are doing coordinate geometry in class 10th, we are talking about area, and we say कि साइड अगर नेगेटिव भी आया है वो कुछ नहीं, आप मैग्नीट्यूड ऑफ साइड लो. अब देखिए, आप क्लास 6 से बच्चे को बता रहे हैं कि -5 3 से छोटा है, और 10th में पहुंच के कह रहे हैं -5 और 5 एक ही है, आप यूनिट लो. वो हम कैसे समझाएं? अगर हम अपने तरफ से थोड़ा, जैसे अगर हम जब नंबर लाइंस करवा रहे हैं कि 3 और -3, 0 में इफ यू मेजर डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, पर -3 को हम कम क्यों बोलेंगे? क्योंकि वो नहीं है. वेन विल मेरे से किसी ने 3 रुपए मैंने किसी से उधार लिया, या मेरे पास नहीं है, आई विल से आई -3. वेरएज अगर मेरे पास 3 रुपए मेरे पॉकेट में है तो आई से +3, इसलिए. सो मेरे पास ज्यादा है और मेरे पास कम है, पर 3 3 ही रहता है. आप नंबर लाइन में मेजर करके देख लो. अगर हम ये एब्सोल्यूट वैल्यू उनको बता सकते हैं बीच बीच में, आई एम नॉट सेइंग दैट यू टेस्ट देम, पर एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब आपको 10th में जाके परेशानी नहीं होगी एज एन इफेक्टिव टीचर कि ये हम बोल रहे हैं, अच्छा नेगेटिव को आप छोड़ो, गोली मारो, उसको लेके ट्रायंगल का एरिया निकालो. -5 भी आया उसका तो कुछ नहीं फर्क पड़ता. ओके. सो दिस इज हाउ इट बिकम्स नेसेसरी. देन वी हैव क्रिएटिंग चैलेंजेस. रिमेंबर, इसे थोड़ा सा स्ट्रगल होना चाहिए लर्निंग. आफ्टर ऑल, there is a saying that I'm a Bengali, and we believe in that कि लक्ष्मी is चंचला. लक्ष्मी है धन की देवी. वो आती भी आसानी से है पर जाती भी आसानी से है, इसलिए कहते हैं लक्ष्मी को चंचला. वेयर इज सरस्वती? सरस्वती को पाना बहुत मुश्किल है, बहुत साधना लेती है. पर एक बार अगर सरस्वती आपके उधर पधारे तो वो साथ नहीं छोड़ती, वो चंचला नहीं है. तो पाने के लिए आपको स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, पर एक बार पा लिया तो वो आपको छोड़ के नहीं जाएगी. So you can have many strategies like questioning, rigorous open tasks, generative questions वगैरह. So for example, अब ये बताइए, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को.
which is not a possible value. It's a very simple thing. Total is 9 और 2a है, so it is 2a plus b. हम algebra के हिसाब से देखें. अब b कौन सा नहीं बन सकता है और क्यों नहीं बन सकता है? b इधर इवन नंबर मतलब 4 नहीं बन सकता है, बिकॉज 2a विल बी इक्वल टू 5 और हमें क्या चाहिए? होल नंबर. 2a अगर 5 है तो a is 2.5 और 2.5 is not acceptable because it is not a whole number. ये वाले चीजें स्पेशली आप देखेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह इसमें बच्चे, बिकॉज दैट प्रॉब्लम, दैट डेप्थ ऑफ नॉलेज इज नॉट देयर. ओके, इस डीप में जाके सोचना, अरे ये तो होल नंबर तो नहीं बनेगा. So there is an evidence showing problem solving to be an integral part of mathematics learning. Teaching through problem solving means that students learn mathematics through real context, problems, situations. All right, जैसे देखिए, आप मुझे इसमें डिफरेंस बता सकते हैं? बस सेम है, बस के पहिए सेम है, पर बस में बैठे हुए लोग अलग है. We have cute animals here, some birds sitting here. इधर there are, human beings sitting here. बाहर का कुछ दृश्य, इधर नीले आसमान है, इधर नहीं है. All right. So what are we talking about? We are talking about constants and variables. Why are they constant? Have a discussion in your class. The best way I have found to introduce constant and variable, आप एक दिन थोड़ा कष्ट करके स्कूल में 5 मिनट जल्दी चले जाइए, जब कोई बच्चा नहीं है स्कूल में, एकदम साफ सुथरा क्लासरूम है, एक फोटो ले लीजिए, मोबाइल फोन में एक फोटो ले लीजिए, एंड सेम डे गो एट द एंड ऑफ योर स्कूल, जब बच्चे जाते जाते कि वो ट्रैश बॉक्स उल्टा पड़ा हुआ है, आपके चेयर्स इधर उधर है, ये है. दो चीजें, एक तो कांस्टेंट और वेरिएबल पता चलेगा, एंड द अदर वन यू कैन टीच देम वैल्यू एजुकेशन थ्रू इट. कि देखो, आप जब स्कूल आते हो, व्हाट इज डज योर क्लासरूम लुक लाइक एंड हाउ यू आर. अगेन, इफेक्टिव टीचर, होलिस्टिक टीचिंग. अब खत्म करने का टाइम आया है, तो थोड़ा सा मुंह मीठा करके चलते हैं. इसी के साथ मैं खत्म करूंगी. अब दो बच्चे गए आइसक्रीम खाने. हाँ, एक को चाहिए था वैनिला, ठीक है, चॉकलेट. उन्होंने जाके बोला कि भाई एक चॉकलेट वैनिला आइसक्रीम दे दो. क्या मिला? गड़बड़ हो गया है ना. गलती कहाँ थी? गलती ये थी कि भाई ये तो है वैनिला और ये है चॉकलेट. अब आप दोनों अलग अलग चीजों को जोड़ दोगे तो यही बन जाएगा ना, पर ये तो चाहिए नहीं था, है कि नहीं? और किस किस को ये चीज खाने को दिल कर रहा है, जरा प्लीज थम्स अप दिखा दीजिए. Similarly, so when we talk about like terms, unlike terms, आप ऐसे कुछ एग्जाम्पल यूज कीजिए जो बच्चों को याद रहे. आई होप जैसे ये मे बी आप लोगों को याद रहेगा. ये भी देखिए, आप देखिए, 1 स्कूप एक्स, 2 स्कूप एक्स स्क्वायर, 3 स्कूप एक्स क्यूब. जब हमने बोला कि भाई हमें ऐसा वाला दो, एक को एक चाहिए, एक को 2 स्कूप चाहिए, एक को 3 स्कूप चाहिए. अब अलजेब्रा तो आता नहीं था उसको, उसने पकड़ा दिया 6 स्कूप. अब 3 बच्चे ये खाएंगे तो कैसे खाएंगे? है ना मुश्किल वाली बात. So with this, I come to the end of my session. So effective teachers will use such problems as starting points and ongoing means for students to investigate and understand
conceptual ideas. बिकॉज कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो स्किल एंड प्रोसीजर्स आ जाएंगे. अगर सिर्फ स्किल एंड प्रोसीजर्स आता है तो कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो डीप लर्निंग कभी भी नहीं हो सकती. And through such problem, all students are provided with appropriate entry. एकदम बेसिक लेवल पे स्टार्ट कर रहे हैं कि हर बच्चा उसके साथ रिलेट कर सके and progressively develop the understanding of concepts and increasingly more skills. Okay? और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो effective teachers है, such teachers need to be continual learners. जैसे हम लोग अभी बैठे हुए हैं इधर. Effective pedagogy is the subject of ongoing research and development, and the way to teach and learn mathematics is never static. ये बदलता रहेगा, बदलना है, आगे भी रहेगा. Thank you all so much. Thank you. I will now switch on my video. 1 second. Uh, Thank you all so much. I hope this will be of some use to you.